everyone, welcome to Angrezi Medium. The idioms for today are: first one, burn bridges. To burn bridges means to destroy paths, connections, reputation or opportunities. It is an act of ending relations with somebody permanently in an unpleasant way. अपना रास्ता खुद ही destroy करना. For example, I burned my bridges when I quit my job in anger. मैंने गुस्से में आकर जॉब छोड़ दी और ऐसा करके मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. I have burnt my own bridge. Next one is calm before the storm. It refers to the quiet or peaceful period before a period during which there is great activity, argument or difficulty. तूफान से पहले का सन्नाटा. For example, before the baby wakes up and starts crying, I should enjoy the calm before the storm. इससे पहले कि बेबी सोकर उठ जाए और रोना शुरू कर दे, मुझे शांति एंजॉय कर लेनी चाहिए. आई शुड एंजॉय काम बिफोर द स्टॉर्म. नेक्स्ट इज कम रेन और शाइन. This expression is used to say that something will happen whether it rains or it shines, no matter what, regardless of the circumstances, work will be done. चाहे कुछ भी हो, आंधी आए या तूफान, ये काम होकर रहेगा. For example, come rain or shine, he is always on time in the office. चाहे कुछ भी हो जाए, वो ऑफिस हमेशा टाइम से आता है. Next is curiosity killed the cat. This means that being inquisitive about other people's affairs may get you into trouble. It is used to warn of the dangers of unnecessary investigation or experimentation. किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है, इस क्यूरोसिटी से आप ट्रबल में भी आ सकते हैं. For example, when he started asking too many questions from his neighbor about their business, they warned him that curiosity killed the cat. जब उसने अपने पड़ोसियों से उनके बिजनेस के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे, तब उन्होंने उसको वार्न किया कि आप दिक्कत में आ सकते हैं, इतनी जिज्ञासा ना दिखाएं. Curiosity can kill the cat. Last one is cut the mustard. To cut the mustard means to reach the required standards, to come up to expectations, to perform very well. बहुत अच्छा perform करना, expectations पर खरा उतरना. For example, he has cut the mustard by qualifying for the IAS. उसने IAS का एग्ज़ाम पास कर लिया है और ये करके उसने अपने पेरेंट्स की expectations पूरी की हैं. He has cut the mustard. Stay tuned for more such videos. Do like, share and subscribe this. Thank you.